पिला माने लास्ट वीडियो रे हमर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस फिनिश है जी डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन से भी फिनिश है जी मींस हमर एक्सरसाइज 7h एंड 7i दीटा फिनिश है जी now we start करिवा differentiability and continuity the next topic is differentiability and continuity but continuity तो हमरा already finish है सची बस एबे खाली हमको differentiability और जोटी क्वेश्चन थिवा continuity चेक करिचे बस सेठी हमें continuity चेक करिवा तो theorem number 6 if a function f is differentiable at a point x equal to c then it is continuous at that point but the converse is not necessarily true theorem means करना if a function suppose मोरा f is a function अच्छी if the function f is differentiable suppose this is the differentiable then the function implies that the function is continuous the differentiable हल्ला माने पक्का continuous आसीबो but converse is not necessarily true that means that suppose a function is continuous then the function may or may not be differentiable but यदि differentiable अछि त पक्का continuous आसीबो तो continuous अछि तो may be differentiable may not be differentiable तो हमको सपोज क्वेश्चन थिबो टेस्ट द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन तो हमें ऑलवेज करना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करियो if suppose मोर फंक्शन टा डिफरेंशिएबल हे गला तो मते अब कंटिन्यूटी चेक करिया नै यूजिंग थ्योरम नंबर 6 द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी रो तुमे ऑलवेज डिफरेंशिएबिलिटी आगे चेक करिवो यदि डिफरेंशिएबल हे जेबो देन तुमको कंटिन्यूटी चेक करिबा नै बस खाली यूजिंग थ्योरम नंबर 6 द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट बट यदि तुमे मिस्टेक करिवो कंटिन्यूटी आगे चेक कर दबो तो तुमको डिफरेंशिएबिलिटी पक्का चेक करिया रछे केना कंटीन्यूअस ले फंक्शन टा मे बी डिफरेंशिएबल मे नॉट बी डिफरेंशिएबल यदि डिसकंटीन्यूअस भी हबो तो से फंक्शन टा मे बी डिफरेंशिएबल मे नॉट बी डिफरेंशिएबल तो हमरो स्टेटमेंट यूज करिवा if a function is differentiable at a point x equal to c then the function is continuous at that point differentiable अछि माने पक्का continuous आसीबो but converse is not necessarily true तो यार प्रूफ भी हमें करिवा let a function fx be differentiable at x equal to c तो मैं आगे assume करना वा at x equal to c suppose the function is differentiable at x equal to c मैं आगे assume करना ले तो differentiable अच्छी तो this implies limit x approaches to c fx minus fc divided by x minus c exists finitely यदि मोर फंक्शन टा डिफरेंशिएबल अछि तो लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करथिबो फाइनाइटली बट एग्जिस्ट भी करथिबो बट फाइनाइट ही होथिबो तो लेट नै जो लेट दिस इक्वल टू f डैश c लेट f डैश c इक्वल टू लिमिट x approaches to c fx minus fc divided by x minus c तो मोर f डैश c मिल गला लिमिट x approaches to c fx minus fc divided by x minus c बट हमको प्रूफ करियर अछि मो डिफरेंशिएबल अज्यूम करछि मते प्रूफ करे छै द फंक्शन इज कंटीन्यूअस in order to prove that fx is continuous at x equal to c it is sufficient to show that limit x approaches to c fx equal to fc तो सपोज मते कंटीन्यूअस प्रूफ करियर अछि तो मते लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू फंक्शन पक्का प्रूफ करियर अछि मोर लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू फंक्शन इज देन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस तो हमें डिफरेंशिएबल तो अज्यूम करने छथि हमको कंटीन्यूअस प्रूफ करियर अछि यदि कंटीन्यूअस मते प्रूफ करियर अछि तो लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू फंक्शन तो हम स्टार्ट करियर लिमिट ऑफ फंक्शन एंड करे वैल्यू फंक्शन यदि ए रिजल्ट हमर प्रूफ हे गेला देन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू c नाउ limit x approaches to c fx so this equals to limit x approaches to c fx minus fc तो मैं fc ऐड कर ली fc सब्ट्रैक्ट कर ली
तो ऐड fc माइनस fc बट मोर fx थिला मु खाली fc ऐड करछि सबट्रैक्ट करछि तो नेक्स्ट स्टेप रे लिमिट x approaches to c fx minus fc divided by x minus c तो मैं x minus c multiply divide कली x minus c multiply divide कली प्लस fc अछि मोर fc रहला now limit of first term plus limit of second term so this equals to limit x approaches to c जो limit of first term ठीक है स्पेस कम अछि म ठीक है स्टेप ओमिट करिवे limit of first term equals to limit of this expression into limit of this expression using algebra of limit so limit x approaches to c fx minus fc divided by x minus c into limit x approaches to c x minus c or plus this one the limit x approaches to c fc तो मोर फर्स्ट स्टेप रे लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लिमिट ऑफ सेकंड टर्म तो लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू लिमिट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन तो मो गोटे स्टेप एटी ओमिट कर देछि टी स्पेस कम अछि तो लिमिट ऑफ दिस तो मोर अछि ऑलरेडी f डैश c दिस वन ला f डैश c यूज कले बट dsm को डायरेक्ट पुट करले दिस वन ला c माइनस c प्लस अछि लिमिट ऑफ fc द कांस्टेंट लिमिट कांस्टेंट तो c माइनस c 0 तो f डैश c into 0 plus fc तो मते एंड रे मिलला fc तो therefore limit of function रे मु स्टार्ट करथली मते एंड रे मिलला वैल्यू ऑफ फंक्शन तो this implies fx is continuous at x equal to c so if a function is differentiable at x equal to c then the function is continuous at x equal to c पक्का तो differentiable टा always imply करियो continuous but continuous टा may or may not be differentiable continuous हेले differentiable भी हे पारे not differentiable हे पारे but जे differentiable अछि तले पक्का हमको continuous मिलियो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अछि जे तुम नोट करिवो द फंक्शन fx equal to mod x fx equal to mod x is continuous at x equal to 0 but it is not differentiable at x equal to 0 तो fx equal to mod x ये फंक्शन टा तुम्हारा कंटीन्यूअस एट द ओरिजिन x equal 0 बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन तो ओरिजिन रे केबे भी डिफरेंशिएबल होनी ए रिजल्ट मन रे केबे के तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे भी पक्का हेल्प करिवो mod फंक्शन टा ऑलवेज कंटीन्यूअस एट x equal 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal to 0 नॉट डिफरेंशिएबल रीजन करना mod फंक्शन तो mod फंक्शन रो ग्राफ थिला दिस से थिला y एक्सिस x एक्सिस इटा mod फंक्शन रो ग्राफ थिला तो येला fx इक्वल टू mod x रो ग्राफ तो फंक्शन टा करना ओरिजिन रे कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट करला माने द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल तो एटी कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट करनी तो ई पॉइंट सब डिफरेंशिएबल हो बट एट द ओरिजिन रे कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट करला माने द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द कॉर्नर पॉइंट माने एट द ओरिजिन अदर पॉइंट्स डिफरेंशिएबल हो बट एट द ओरिजिन और एट x equal 0 the function is not differentiable ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मन रखिबो तो तुमरो ए टॉपिक रे आउ दीटा फार्मूला मन रखिबो LHD RHD तो हमें ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे LHD RHD फार्मूला पढि सचंदी तो LHD फार्मूला थिला लिमिट h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h and RHD फार्मूला थिला लिमिट h approaches to 0 f of c plus h minus fc divided by h तो तुम्हें ए एक्सरसाइज में LHD RHD फार्मूला ठीक है मन रखिबो बस तुमरो एक्सरसाइज रो सब बिट आराम से तुम्हें सॉल्व करि परिबो एक्सरसाइज 7J टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बस हमको डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करे छै नंबर 1 अछि mod 1 minus 1 by x
at the point x equal to 1. Let fx equal to mod 1 minus 1 by x. तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करिया छी तो ऑलवेज करना तुम डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट चेक करिवो यदि डिफरेंशिएबल हेगला देन यूजिंग थ्योरम नंबर 6 द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट द गिवन पॉइंट. तो डिफरेंशिएबिलिटी रो एलएसडी लिमिट h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h. तो ये c रा वैल्यू करना जो गिवन पॉइंट अछि तो दिस अनला हमरो c रा वैल्यू तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 f of 1 minus h minus f1 divided by minus h. लिमिट h approaches to 0 f1 minus h तो मतलब fx मिल जाय छी तो एटी 1 minus h पुट करला माने दिस वन 1 minus h ही हबो तो mod 1 minus 1 by 1 minus h minus f1 1 minus 1 by 1 divided by minus h. So this equals to limit h approaches to 0 LCM mod 1 minus h minus 1 divided by 1 minus h minus ये ला 1 minus 1 रा mod divided by minus h equals to limit h approaches to 0 1 1 cancel हो गला minus h by 1 minus h रा mod minus ये तो 0 divided by minus h. तो h is a very small number but positive तो এটা नेगेटिव अछि 1 minus h तो पॉजिटिव अछि तो यार mod वैल्यू फाइंड करिबा तो डेफिनेटली लिमिट h approaches to 0 तो मते h by 1 minus h मिलिबो और डिवाइडेड बाय minus h अछि तो इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 h by 1 minus h into 1 by minus h ये h कैंसिल हो जीवो तो दिस implies limit h approaches to 0 तो 1 minus 1 by 1 minus h अछि तो डायरेक्ट h equal to 0 पुट करिबा minus 1 by 1 minus 0 equal to minus 1 by 1 equal to मते LSD मिलला minus 1. देन तुमे RSD फाइंड करिबो RSD फॉर्मूला लिमिट h approaches to 0 fc plus h minus fc divided by h अछि तो here c equal to 1 limit h approaches to 0 f1 plus h minus f1 divided by h तो सेमती f1 plus h रो वैल्यू फाइंड करो तो एटी 1 plus h पुट करला माने mod 1 minus 1 by 1 plus h minus f1 करला माने mod 1 minus 1 by 1 divided by h limit h approaches to 0 LCM 1 plus h minus 1 by 1 plus h minus ये ला 1 minus 1 रो mod divided by h तो this equals to limit h approaches to 0 ये 1 1 cancel हो जीवो तो मते मिलला h by 1 plus h रो mod minus 0 divided by h तो this equals to limit h approaches to 0 h by 1 minus h 1 plus h रो mod ला h by 1 plus h और h भी पॉजिटिव 1 plus h भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव रो mod भी पॉजिटिव और डिवाइडेड बाय अछि h तो इनटू मु कर देली 1 by h h कैंसिल हो जीवो तो इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 1 by 1 plus h तो मु 0 पुट करले मते 1 by 1 plus 0 equal to 1 मिलला तो मोर LSD minus 1 थिला RSD 1 मिलला therefore LSD not equals to RSD it is not equal अछि this implies fx is not differentiable at the point x equal to 1 at a given point अछि at x equal to 1 the function is not differentiable यदि नॉट डिफरेंशिएबल हे गेला तो हमें को कंटिन्यूटी भी पक्का चेक करे रछे कहना नॉट डिफरेंशिएबल है नॉट कंटीन्यूअस हो एमती किछि स्टेटमेंट नाही स्टेटमेंट अछि डिफरेंशिएबल इंप्लाइज दैट कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल टा इंप्लाइज दैट नॉट कंटीन्यूअस एमती किछि स्टेटमेंट दिया है नाही ना हमको कंटिन्यूटी चेक करियर अछि तो कंटिन्यूटी पय LHL फाइंड करिवा तो LHL ला लिमिट x अप्रोचेस टू 0.1 अछि तो 1 माइनस तो इट मोर fx
तो fx तो सिंगल फंक्शन अछि तो लिमिट x approaches to 1 minus fx equal mod 1 minus 1 by x तो LHL केमती इवैल्यूएट करंती मतलब मने थिबो लेट ने जो x equal to 1 minus h when x approaches to 1 so this implies h value tends to 0 so equals to limit h approaches to 0 mod 1 minus 1 by x equal to 1 minus h so this equal to limit h approaches to 0 mod LCM 1 minus h minus 1 divided by 1 minus h 1 cancel कीजिए limit h approaches to 0 mod minus h by 1 minus h so this equals to limit h approaches to 0 minus h रो mod h is 1 minus h तो already positive अच्छी तो तारो mod भी 1 minus h तो नेक्स्ट स्टेप रे 0 पुट कला माने मते मिलला 0 by 1 minus 0 equal to 0 तो मते LHL मिली गला 0 देन हमें RHL फाइंड करिवा तो RHL limit x approaches to 1 plus fx so this equals to limit x approaches to 1 plus fx equal to mod 1 minus 1 by x equals to limit तो हमको सब्स्टिट्यूशन करिए छे let x equal to 1 plus h when x approaches to 1 so this implies h value tends to 0 limit h approaches to 0 mod 1 minus 1 by 1 plus h x equal to 1 plus h तो सेमती LCM limit h approaches to 0 1 plus h minus 1 by 1 plus h 1 cancel equals to limit h approaches to 0 h by 1 plus h तो mod तो h the positive 1 plus h the positive तो यार mod value also same h by 1 plus h by 1 plus h now h equal to 0 put करिए 0 by 1 plus 0 equal to 0 तो मते LHL 0 मिलला RHL मते 0 मिलला देन कौन करिए ना f1 माने fa भी तो मते फाइंड करे छ ना तो 1 पुट करला माने mod 1 minus 1 by 1 तो this equal to mod 1 minus 1 तो आंसर भी 0 मिलला तो LHL RHL FA सब इक्वल है therefore LHL equals to RHL equals to F1 so this implies fx is continuous at the point x equal to 1 so end answer la hence fx is not differentiable but continuous at the point x equal to 1 easy बस LHL RHL FA फाइंड करिए कंटिन्यूटी चेक करियो और तुम्हारा LHD RHD फाइंड करियो यदि इक्वल थी बोते डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल थिले नॉट डिफरेंशिएबल बट यदि डिफरेंशिएबल हे थंदा तो मते LHL RHL FA मते करिया पड़ना थंदा यूजिंग थ्योरम नंबर 6 मु डायरेक्ट कौन कर थंदा द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट मेंशन करि थंदी ना नंबर 1 Number 2 x square mod x at the point x equal to 0 fx equal to let fx equal to x square mod x अच्छी x square mod x अच्छी but point अच्छी at the point 0 अच्छी तो LHD चेक करिए LHD तो LHD formula limit h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h तो here c equal to हमको given देची 0 तो limit h approaches to 0 f of 0 minus h minus f0 divided by minus h equals to limit h approaches to 0 f0 minus h 0 minus h put करला मैंने 0 minus h रो square mod 0 minus h minus 0 put करला मैंने 0 रो square 0 into mod 0 and divided by minus h so this equal to limit h approaches to 0 0 minus h the minus h रो square ला h square 0 minus h minus h the negative तारा mod ला h divided by it 0 अच्छी minus h
तो h कैंसिल हो जीवो तो इक्वल टू मिडला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h स्क्वायर तो 0 पुट करले मते 0 मिलला तो LHD मते 0 मिल गला ना RHD फाइंड करिवा तो RHD लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of c plus h minus fc divided by h तो equals to limit h approaches to 0 f of c plus h 0 plus h minus f0 divided by h limit h approaches to 0 f0 plus h तो 0 plus h रो स्क्वायर mod 0 plus h minus f0 0 रो स्क्वायर 0 into mod 0 divided by h equals to limit h approaches to 0 h square ila 0 plus h ro mod so this equal to h into h divided by h h cancel ho jibo तो limit h approaches to 0 h square तो 0 पुटले मते 0 मिलला तो LHD 0 मिलिथिला RHD भी 0 मिलिगला therefore LHD equals to RHD so this implies function fx is differentiable डिफरेंशिएबल at x equal to 0 तो मोर डिफरेंशिएबल हे गला डिफरेंशिएबल माने मते आ कंटिन्यूटी चेक करे नै since fx is differentiable at x equal to 0 so fx is continuous at x equal to 0 तो डिफरेंशिएबल हे गेले तुम पे बहुत इजी हे जीवा कंटिन्यूटी चेक करिवा नै तुम डायरेक्ट करना यूजिंग थ्योरम नंबर 6 since fx is differentiable at x equal 0 so the function fx is continuous at x equal 0 बस एठी मेंशन करिवा तो तुम सॉल्यूशन कंप्लीट हे जीवा नंबर 3 fx equal to tan x at the point x equal to pi by 2 तो मते fx equal to tan x given देछि at the point x equal to pi by 2 तो आगे डिफरेंशिएबिलिटी पे LHD फाइंड करिवा LHD लिमिट h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h तो equals to limit h approaches to 0 f of pi by 2 minus h minus f pi by 2 divided by minus h equals to limit h approaches to 0 f pi by 2 minus h tan pi by 2 minus h minus f pi by 2 tan pi by 2 सिगरनी तो divided by minus h तो equals to limit h approaches to 0 tan 90 minus theta रा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अछि ना cot theta तो cot h ती तुमको मिलला इंफिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस h यदि माइनस इंफिनिटी मिलला तो ये रिजल्ट केबे भी एग्जिस्ट करिवनी तो देयरफॉर करना LHD डज नॉट एग्जिस्ट तो मोर LHD एग्जिस्ट करने माने केबे भी डिफरेंशिएबल हबनी फिर भी तुमको RHD फाइंड करियर अछि तो RHD लिमिट h approaches to 0 fc plus h minus fc divided by h so this equals to limit h approaches to 0 fc plus h pi by 2 plus h minus f pi by 2 divided by h so equals to limit h approaches to 0 f pi by 2 plus h put करले मते मिलला tan pi by 2 plus h minus f pi by 2 so tan pi by 2 divided by h equals to limit h approaches to 0 tan 90 plus theta minus cot theta तो minus cot h minus infinity divided by h तो ये infinity अच्छी मैंने definitely यार result does not exist नहीं आसीबो तो therefore RHD does not exist LHD exists kalani RHD भी exist kalani so fx is not differentiable
not differentiable at x equal to pi by 2. तो not differentiable है गला. Then हमको कौन ना पक्का continuity check करे पड़ेगा. अगर not differentiable है तो हमको continuity check करिए रचे. तो continuity पे LHL find करीबा. LHL limit x approaches to pi by 2 minus तुम्हारा fx equal to tan x अच्छे. तो single function अच्छे में fx equal to tan x यूज करिए. Then के substitution कर ले. then के substitution करीबा pi by 2 minus h when x approaches to pi by 2, so this implies h value tends to 0. So equals to limit h approaches to 0, tan x equal to pi by 2 minus h. So limit h approaches to 0, tan 90 minus theta, cot h. So हम 0 पुट कर लिए cot 0 मिल रहा. cot 0 तो तुम्हारा डेफिनेटली इंफिनिटी था. मतलब तुमको LHL भी एग्जिस्ट करलानी. और LHL एग्जिस्ट करलानी मैंने केबी भी कंटिन्यूअस हबनी. फिर भी हमें सब RHL और वैल्यू फंक्शन भी फाइंड करियो. तो RHL लिमिट x approaches to pi by 2 plus tan x. Then substitution करियो let x equal to pi by 2 plus h when x approaches to pi by 2. So this implies h value tends to 0. So equals to limit h approaches to 0, tan pi by 2 plus h equals to limit h approaches to 0, tan 90 plus theta minus cot h. तो 0 पुट कर हमने minus cot 0. तो cot 0 तुम्हारा इंफिनिटी. तो माइनस इंफिनिटी. तो ये भी एग्जिस्ट करला नहीं. तुम्हारा LHL भी एग्जिस्ट करला नहीं, RHL एग्जिस्ट करला नहीं. तो केबी भी कंटिन्यूअस हबनी. बट तुमको f pi by 2 भी फाइंड करे रचे. f pi by 2 इक्वल टू tan pi by 2. तो tan 90 तुम्हारा नॉट डिफाइंड. तो किसी भी एग्जिस्ट करनी मींस फंक्शन टा क्लियरली तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस. So fx is discontinuous at x equal to pi by 2. तो मोरो ना differentiable ला ना continuous ला. Hence fx is neither continuous, neither differentiable, nor continuous at x equal to pi by 2. ना differentiable अच्छे ना continuous अच्छे at the point x equal to pi by 2. तो ठीक है continuity और differentiable चेक करना लेंथी ही जीवा. बट यदि differentiable पड़ी गला तो solution definitely हम पे easy ही जीवा. Number 4, fx equal to cot x at the point x equal to pi by 2. फंक्शन देखिए at the point x equal to pi by 2. तो सॉल्यूशन रा फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करियो. तो LHD फॉर्मूला लिमिट h approaches to 0, f of c minus h minus fc divided by minus h equals to limit h approaches to 0, f of c minus h, c equal here pi by 2, this one is c value, pi by 2 minus h minus f pi by 2 divided by minus h equals to limit h approaches to 0, f pi by 2 minus h. तो ये यूज करला हमने मोरो रिजल्ट ला cot pi by 2 minus h. तो f pi by 2 equal to cot pi by 2 divided by minus h. तो equals to limit h approaches to 0, cot 90 minus theta equal to tan theta. तो tan h cot 90 0 divided by minus h. Limit h approaches to 0 minus tan h by मतलब h मिल रहा. तो minus tan h by h. But limit of this function तो already तुम्हारा limits chapter है जायची. तो यार limit equal to 1 तो minus 1. तो मतलब मिल रहा minus 1 ला LHD value. Limit h approaches to 0, fc plus h minus fc divided by h.
So this equals to limit h approaches to 0. C to pi by 2 f pi by 2 plus h minus f pi by 2 divided by h. So equals to limit h approaches to 0 f pi by 2 plus h cot pi by 2 plus h minus f pi by 2 cot pi by 2 divided by h equals to limit h approaches to 0 cot 90 plus theta minus tan theta minus tan h cot 90 0 divided by h. So this equals to limit h approaches to 0 minus tan h divided by h. तो यार लिमिट तो 1 अच्छी फॉर्मूला अच्छी तो -1 इक्वल्स टू मते मिलला -1 और तुम्हारा लिमिट रे फॉर्मूला अच्छी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x डिवाइड बाय x इक्वल टू 1 ए फॉर्मूला यूज करके तुम्हें एटी भी 1 यूज करियो तो एटी भी 1 यूज करियो तो देयरफॉर मते LSD मिलला इक्वल्स टू RSD. So this implies fx is differentiable at the point x equal to pi by 2. So differentiable medigala since fx is differentiable at the point x equal to pi by 2, so this implies fx is continuous at the point x equal to pi by 2. No answer. Easy बस LSD RLC चेक कर ली मतलब इक्वल मिलला मोर डिफरेंशिएबल हो गला तो फंक्शन द डिफरेंशिएबल मींस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस एट द गिवन पॉइंट. Number 5 fx equal to mod sin x अच्छी at the point x equal to pi at the point x equal to pi. तो LSD फाइंड करिए फर्स्ट. LSD लिमिट h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h equals to limit h approaches to 0 f pi minus h minus f pi divided by minus h equals to limit h approaches to 0 f pi minus h mod sin pi minus h minus f pi mod sin pi divided by minus h. Limit h approaches to 0 sin pi minus theta formula trigonometry formula sin h. Sin h रा mod sin pi value 0 तो 0 रा mod divide by minus h. तो h था positive means sin h definitely positive. तो यार mod value sin h divided by minus h. तो minus constant अच्छी तो minus limit h approaches to 0 sin h by h. तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी लिमिट फॉर्मूला -1 तो मते LSD मिलला -1. नाउ RSD फाइंड करियो. Limit h approaches to 0 f of c plus h minus fc divided by h. So this equals to limit h approaches to 0 fc equal to pi plus h minus f pi divided by h equals to limit h approaches to 0 f pi plus h the mod sin pi plus h minus f pi mod sin pi divided by h. So equals to limit h approaches to 0 sin pi plus theta और trigonometry formula minus sin theta तो minus sin h sin pi तो 0 divided by h. तो equals to limit h approaches to 0 minus sin h minus रा mod तो positive sin h तो positive अच्छी तो यार mod value sin h divided by h. बस यूजिंग फॉर्मूला ए बी मते 1 मिलला. LSD मते -1 मिलतिला RSD मते 1 मिलला. देयरफॉर LSD not equal to RSD. So this implies fx is not differentiable
at the point x equal to pi. यदि नॉट डिफरेंशिएबल अच्छी तो हमको पक्का कंटिन्यूटी भी चेक करियर अच्छी. तो कंटिन्यूटी पे LHL फाइंड करिवा. LHL लिमिट x approaches to pi अच्छी. तो here fx. तो this equals to limit x approaches to pi fx equal to mod sin x. Then substitution x equal to pi इटा माइनस LHL अच्छी तो माइनस यूज करिवा pi minus h when x approaches to pi, so this implies h value tends to 0. So equals to limit h approaches to 0 mod sin pi minus h. So equals to limit h value tends to 0 sin pi minus theta of formula sin theta means sin h mod. So this equals to limit h approaches to 0 as well as sin h mod sin h. तो 0 पुट करिवा तो sin 0 equals to 0. तो हमको LHL वैल्यू मिलना 0. Now RHL फाइंड करिवा and f pi भी फाइंड करिवा. RHL limit x approaches to pi plus तो इट मते fx यूज करिए. तो this equals to limit x approaches to pi plus fx equal to mod sin x. Then substitution, let x equal to pi plus h. When x approaches to pi, so this implies h value tends to 0. So equals to limit h approaches to 0 mod sin pi plus h equals to limit h approaches to 0 sin pi plus theta रा formula minus sin theta तो minus sin h रा mod. So this equals to limit h approaches to 0 minus रा mod positive sin h रा mod plus sin h मैंने minus sin h रा mod ला sin h. Now 0 put ला sin 0 equals to 0 मिलला. RHL मध्ये 0 मिलला. तो f pi फाइंड करिवा. तो f pi equal to mod sin pi. sin pi रा तो वैल्यू हमको 0 जानना चाहिए. तो 0 mod equal to 0. So therefore LHL equals to RHL equals to मिलला f pi. So this implies fx is continuous at the point x equal to pi. तो एंड तुम्हें आंसर नीचे मेंशन करिवा. The function is not differentiable at x equal to pi but continuous at x equal to pi. तुम्हें ये आंसर लेंगे नीचे ऐड कर दो. Function is not differentiable at x equal to pi and continuous at x equal to pi. fx equal to x by 1 plus mod x at the point x equal to 0. fx equal to given the x by 1 plus mod x at the point x equal to 0. LHD limit h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h equals to limit h approaches to 0. c equal to here 0. So f of 0 minus h minus f0 divided by minus h equals to limit h approaches to 0. 0 minus h is minus h f minus h minus f0 divided by minus h. Then limit h approaches to 0 f minus h equal to minus h divided by 1 plus mod minus h. Now 0 equal to 0 by 1 plus 0 mod divided by minus h equals to limit h approaches to 0 minus h by 1 plus mod h value h minus 0 divided by minus h. So equals to limit h approaches to 0 minus h by 1 plus h into 1 by minus h. Now minus h cancel लीजिए तो equals to h approaches to 0 1 by 1 plus h. इसमें कैंसिल कर दो तो h equal to 0 पुट कर ली 1 by 1 plus 0 equal to 1. तो मतलब LHD वैल्यू मिलना 1. Now RHD limit h approaches to 0 f of c plus h
minus fc divided by h equals to limit h approaches to 0 f c equal to 0 अच्छी तो 0 plus h minus f0 divided by h equals to limit h approaches to 0 fh minus f0 divided by h equals to limit h approaches to 0 fh तो h पुट करना मैंने h by 1 plus mod h minus 0 तो 0 by 1 plus mod 0 divided by h equals to limit h approaches to 0 h by 1 plus h minus 0 divided by h. So this equals to limit h approaches to 0 h by 1 plus h into 1 by h. H cancel है now h equal to 0 put कर 1 by 1 plus 0 equal to 1. तो हमको मिला LSD equals to RSD. This implies fx is differentiable at the point x equal to 0. तो only हमारा differentiable है differentiable का मतलब the function is continuous at the point x equal to 0. Since fx is differentiable at x equal to 0, so using theorem number 6, so this implies fx is continuous at x equal to 0. So differentiable ta always implies continuous, but continuous ta may be differentiable. Continuous ला हमने function may be differentiable or may not be differentiable. तो तुम्हें always differentiability आके check करीबो, then continuity. यदि differentiable ला तुमको continuous check करे, continuity check करे नहीं, यदि not differentiable हो, then तुम्हें पक्का continuity check करीबो. Number 7, fx equal to x into sine 1 by x when x not equal to 0, 0 when x equal to 0 at the point x equal to 0. At the point x equal to 0, so test the differentiability and continuity of the function. तो मैं first differentiability check करेगा. LSD limit h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h. So this equals to limit h approaches to 0 fc minus h equal to here given which is 0, so 0 minus h minus f0 divided by minus h equals to limit h approaches to 0 f0 minus h f minus h minus f0 divided by minus h equals to limit h approaches to 0 f minus h equal to minus h into sine 1 by minus h और f0 equal to 0 ला मैंने तुमको fx equal to 0 यूज करे जो गिवन देछि ना तो 0 यूज करे minus h ना ये तो 0 अछि तो minus h कैंसिल हो जीवो तो equals to मिलला limit h approaches to 0 sin minus 1 by h तो sin minus theta equal to minus sin theta तो limit h approaches to 0 minus sin 1 by h but h समेट 0 पुट करी परिवे ना कल पुट कला पर 1 by 0 is not a real number रियल नंबर होनी तो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन रियल नंबर तुम्हें जहां भी यूज करियो रियल नंबर यदि किछि हम पुट ना करी परिवा तो तुम्हें स्टेटमेंट देबो एन ऑक्सीलेटिंग number between -1 to 1 यदि ऑक्सीलेटिंग नंबर between -1 to 1 मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर मिलला नहीं यदि किसी पर्टिकुलर नंबर ना मिलला तो therefore LSD does not exist. तो यदि किसी पर्टिकुलर नंबर न मिलिबो माने n belongs to any real number न मिलला then आंसर आसीबो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और LSD does not exist. तो सेम थी तुम्हें RSD फाइंड करिबो
तो ये एग्जिस्ट करने माने केबे भी डिफरेंशिएबल होबनी फिर भी हमको आरएसडी फाइंड करियर अछि लिमिट h approaches to 0 f of c plus h minus fc divided by h. So this equals to limit h approaches to 0 f of c plus h 0 plus h minus f0 divided by h. So equals to limit h approaches to 0 0 plus h तो h fh equal to पुट करना माने मते h into sin 1 by h मिलला माइनस f0 तो हमरो x equal 0 तो fx equal 0 तो हम इट 0 ही यूज करिवा तो डिवाइड बाय h ये तो 0 अछि सिंपलीफिकेशन हे गला परे h कैंसिल हे जेबा तो लिमिट h approaches to 0 मिलला sin 1 by h तो एटी भी हमें तो 0 पुट करि परिबनी 0 पुट करला माने नॉट डिफाइंड हो बट साइन रो डोमेन रियल नंबर तो तुम जेबी भी पुट करिवो रियल नंबर पुट करिवो तो यार किछि रिजल्ट आसुनी तो सेमती स्टेटमेंट देबो एन ऑक्सिलेटिंग नंबर between -1 to 1 तो -1 to 1 मते किछि पर्टिकुलर नंबर मिलनी therefore RHD does not exist. तो LHD exist करनी RHD exist करनी तो this implies fx is not differentiable at x equal to 0 तो फंक्शन टा नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal 0 यदि नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा तो पक्का हमको कंटिन्यूटी पे चेक करे छै तो कंटिन्यूटी पे LHL RHL F0 फाइंड करिवा now LHL limit x approaches to 0 minus तो 0 minus fx तो 0 minus कहला माने 0 रू स्मॉलर तो 0 रू स्मॉलर अछि माने नॉट इक्वल 0 तो नॉट इक्वल 0 रे fx इक्वल टू यूज करिवा x into sin 1 by x ये क्वेश्चन हमें कंटिन्यूटी रे ऑलरेडी सॉल्व करि सरछंती एटा रिपीट हो जे लेट x equal to 0 minus h when x approaches to 0 so this implies h value tends to 0 so this equals to limit h approaches to 0 0 minus h into sin 1 by 0 minus h equals to limit h approaches to 0 minus h into sin minus 1 by h equals to limit h approaches to 0 minus h sin minus theta minus sin theta minus sin 1 by h so equals to limit h approaches to 0 minus minus plus h into sin 1 by h now 0 पुट कला माने एटी तो 0 यूज करि परिबा एटी 0 यूज करि परिबानी केना 1 बेस टा नॉट डिफाइंड हे जीवो तो तुमरो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन रियल नंबर जदी भी पुट करियो रियल नंबर पुट करो अदरवाइज किछि पुट करिबानी तो मते आंसर मिलला 0 into तो यार रिजल्ट आसीबो एन ऑक्सिलेटिंग नंबर between -1 to 1 तो किछि पर्टिकुलर नंबर नुहे बट 0 into अछि 0 into एनी फाइनाइट नंबर अछि तो आंसर ला 0 तो मते LHL मिली गला 0 जेमति म LHL फाइंड करले तो RHL म एटी के एडिट कर दो छी एक्जेक्टली सेमति ही आसीबो तो RHL 0 प्लस कर देबो तो 0 प्लस रे भी तुम्हारा fx इक्वल टू x into sin 1 by x यूज करो 0 प्लस माने 0 रो ग्रेटर तो माने नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 अछि तो मते x into sin 1 by x यूज करे छै देन सब्स्टिट्यूशन 0 plus x approaches to 0 implies that h tends to 0 तो ये प्लस आसीबो देसन भी प्लस आसीबो तो ये प्लस हे गला देसन प्लस हैला तो ए लाइन रो किछि यूज नहीं तो या पर लिमिट h approaches to 0 h into sin 1 by h तो 0 पुट कली तो यार रिजल्ट सेमती आसीबो एन एक्सेलरेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1 तो मते रिजल्ट 0 मिलला तो देयरफॉर करना LHL इक्वल टू RHL मिलला और f0 भी मते फाइंड करियर अछि f0 इक्वल हमको x इक्वल 0 तो f0 इक्वल टू 0 ही मिलिबो तो LHL RHL f0 all are equal मिलला तो this implies fx is continuous at x equal to 0 तो continuous वाला not differentiable hence
fx is not differentiable at x equal to 0 but continuous at x equal to 0. तो not differentiable है but continuous at x equal to 0. बस the answer. Number 8, last number, fx equal to given the chi 1 minus e to the power minus x divided by x when x not equal to 0 and a chi 1 when x equal to 0. So at the point x equal to 0, तो हम check करें समझे continuity and differentiability. The solution, तो हमें तो always LSD to start करिए LSD limit h approaches to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h. c equal here 0 chi, the limit h approaches to 0 f of 0 minus h minus f0 divided by minus h. Limit h approaches to 0 is 0 minus h है, तो 0 minus h ला minus h minus f0 divided by minus h. 0 minus h कला माने थोड़ा not equal 0 तो smaller हो जाए ना not equal 0 तो हमें यूज करेगा first expression टा. The limit h approaches to 0 f minus h equal to 1 minus e to the power minus of minus h divided by minus h. हमारा f minus h expression minus f0 तो 0 केस में यूज करें 1 तो ये 1 यूज करें divided by minus h. Limit h approaches to 0 1 minus e to the power h है divided by minus h minus 1 divided by minus h. Limit h approaches to 0 1 minus e to the power h LCM तो ये minus minus plus h divided by minus h or whole divided by minus h equals to limit h approaches to 0 1 minus e to the power h plus h divided by minus h into 1 by minus h equals to limit h approaches to 0 1 minus e to the power h plus h divided by h square. But यार लिमिट केमती सॉल्व करिवा तो तुमको गोटे फार्मूला दरकार हबो e to the power x रे फार्मूला तो यार फार्मूला थिला एक्सपेंशन फार्मूला अछि 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus empty dot 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 to infinity. तो ये फार्मूला तुम्हारा logarithmic series and exponential series topic रे ही थिला the sequence series topic रे ही थिला. Limit h approaches to 0 1 minus तो 1 plus h अच्छी सेमती रख देली minus e to the power h रा फार्मूला 1 plus h by 1 factorial h square by 2 factorial plus h cube by 3 factorial plus empty dot 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 to infinity divided by अच्छी h square. Then bracket open करिवा limit h approaches to 0 1 plus h minus 1 1 factorial value 1 तिला minus h square by 2 factorial minus h cube by 3 factorial minus empty continue करते infinitely divided by h square. Now 1 1 cancel हो h cancel हो तो limit h approaches to 0. Now h square कौन करिए ना each term में divide कर दो divide कर ले minus 1 by 2 factorial इटी cancel हो minus h by 3 factorial minus empty continue करते infinitely. Now h equal 0 put कर ला मने minus 1 by 2 factorial minus ये सब 0 minus 0 ये सब empty continue करती हो तो एंटर मते मिलला -1 by 2 factorial ला वैल्यू ला 2 तो मते -half मिलला LHD इजी. तो मु नेक्स्ट स्टेप रे RHD सॉल्व करछि बट एक्सपेंशन सीरीज नो यूज करे तो मु प्रॉब्लम सॉल्व करे पे डिफिकल्ट हे जीवो तो मैं इठी करेक्शन करी के RHD कर दवा डिफिकल्ट नो तो c plus h वेसन ला fc by -h ला h हे जीवो c तो 0 अछि 0 plus h कर देली f0 by h तो लिमिट h approaches to 0 तो ये मोर h रहला f0 by h रहला
तो एफ एच मुझे एच पुट करी 1 माइनस ई टू दी पावर और ये मोर एच रही माइनस एच डिवाइड बाय एच रहा और डिवाइडेड बाय एच रहा देन एलसीएम 1 माइनस ई टू दी पावर एच एच बटे माइनस एच अच्छी माइनस एच रहा और डिवाइड बाय एच रहा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच देन एलसीएम नहीं जीव 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच ये माइनस एच डिवाइड बाय एच रहा डिवाइड बाय एच रहा खाली टिके चेंज हो जाए तो e टू दी 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एच डिवाइडेड बाय एच रहा तो ये भी इंटू 1 बाय एच रहा 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एच ये माइनस एच और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर रहा तो ये भी हमें से e टू दी पावर x यूज करिवा बट एटा e टू दी पावर माइनस एच अछि यदि एटा माइनस एच हबो माइनस x करिवा तो एटा तुमर माइनस माने एटा माइनस ए जीवो देन तुमर एटा प्लस ए जीवो देन माइनस x रो क्यूब एटा माइनस ए जीवो तो ये अल्टरनेट सीरीज आसीबो प्लस माइनस माइनस पर प्लस माने कंटिन्यू करथिबो तो 1 प्लस 1 माइनस h रहला तो ये फार्मूला मु यूज करिवि मोर 1 माइनस h by 1 factorial plus h square by 2 factorial ये माइनस h cube by 3 factorial प्लस एमते कंटिन्यू करथिबो डिवाइडेड बाय h square तो 1 माइनस h रहला ओपन कले माइनस 1 प्लस h जीवो ये माइनस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एमती कंटिन्यू करिवो तो देखो 1 1 कैंसिल हो जीवो h कैंसिल हो जीवो नाउ h स्क्वायर डिवाइड कले तो ये माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एटा प्लस h बाय 3 फैक्टोरियल तो माइनस एमती कंटिन्यू करथिबो h इक्वल 0 पुट कला माने ये तो माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल h बाय 3 फैक्टोरियल एटा तुम्हारा 0 आसीबो 0 0 0 कंटिन्यू करिवो तो ये को सिंप्लिफिकेशन कले माइनस 1 बाय 2 तो मते LSD RSD दीटा सेम वैल्यू मिलला तो एन आंसर कोन हबनो LSD इक्वल RSD therefore LSD equals to RSD so this implies fx is differentiable at x equal to 0 the differentiable है गला since the function is differentiable so the function is continuous at the given point since fx is differentiable at x equal to 0 so this implies fx is continuous at x equal to 0 so using theorem number 6 the function is continuous at x equal to 0 तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चैप्टर ए टॉपिक रे यदि केबे क्वेश्चन असला टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी तो आगे ऑलवेज एलएसडी आरएसडी माने आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिवो यदि डिफरेंशिएबल है गला यूजिंग थ्योरम नंबर 6 द फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट यदि नॉट डिफरेंशिएबल ना देन तुमको कंटिन्यूटी पक्का चेक करियर अछि।